paper 1 revision session. So let's start with past paper questions based on nuclear physics. Question 1, we have, what does an alpha particle consist of? So alpha particle का ये symbol है, its proton number is 2 and its mass number is 4. So alpha particle में it has got 2 protons and it has got 2 neutrons. So first वाले में हमारे पास 2 protons and 2 neutrons only. So the answer is B. Question 40, the count rate from a radioactive source falls from 4,000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half-life of the source? Okay, अब इसको करने के लिए मैंने आप लोगों को एक जनरल मेथड सिखाया था. So 4,000 is the initial count rate and 500 is the final count rate. अब हमारे पास हाफ लाइफ क्या होती है जिसमें जो काउंट रेट है हाफ होता जाता है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वैल्यू 4,000 का हाफ करें सो वी हैव 2,000, फिर 2,000 का हाफ करें सो वी हैव 1,000 और 1,000 का हाफ करें सो वी हैव 500. So 4,000 से 5,000 में आने के लिए how many half lives? 1, 2, 3 half lives have passed. और इसने आपसे ये कहा है कि 4,000 से 500 पे आने के लिए it took a total time of 72 minutes. So if we have to calculate its half life, so total time divided by the number of half-lives. So number of half-lives हमारे पास 3 है और total time जो है that is 72 minutes. So 72 divided by 3. So we get 3 2s are 6, 3 4s are. So that is 24 minutes. So the correct answer is D. So जब भी half-life का आता है, just write the initial count rate. 2 से इसको डिवाइड करते जाओ until you get the final count rate value. So 4,000 का हाफ 2,000, 2,000 का हाफ 1,000, फिर 1,000 का हाफ is 500. So यहाँ से यहाँ तक आने में 1, 2, 3 half lives have occurred. So total time is 72 minutes divided by the number of half lives, which is 3. So you get the value of the half life. The results of the alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following. So alpha scattering experiment था जिसमें हमारे पास ये atoms थे और जिसमें हम alpha particles bombard करते थे, and we observed that most of the alpha particles were able to pass straight through without being deflected. ठीक है, so ज्यादातर गुजर गए and there were few that were deflected. इससे ये कि एक तो ये कि major activity, the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. So first option है alpha particles scattering experiment से हमें क्या nuclear fusion पता लगता है? No. Radioactive isotopes, so the size of the nucleus. Okay, the size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. और हमें ये भी पता लगता है कि the central part of the atom is nucleus which is positively charged. Okay. Question number 34. A nucleus of an isotope of cobalt is represented by this symbol. What is the composition of the nucleus? So composition means he's asking you for the number of protons and the number of neutrons. So iska proton number is 27. So number of protons है 27 और number of neutrons निकालने के लिए mass number minus proton number. So neutrons हमारे पास आ जाएंगे 59 minus 27. 5 minus 2 is 3. 9 minus 7 is 2. So protons are 27 or neutrons 32.
So the correct option is A. The only stable isotope of gold, Au, has 79 protons and 118 neutrons in a nucleus of an atom. How many electrons are there in a neutral atom? The neutral atom में the number of protons and electrons are equal. So electrons are also 79. A sample of a radioactive isotope with a very long half-life is placed next to a detector. Sheets of different materials are inserted one at a time between the radioactive sample and the detector. The background count rate is subtracted from the readings on the detector, and the corrected count rates are recorded in the table. So, type of material, when there is no sheet, the count rate is 450. When you place an aluminium sheet, the count rate falls to 381. When you place a lead sheet, the count rate falls to 285. And when you insert a paper sheet, so the count rate does not falls, which means no alpha particles are present and beta is present and gamma is also present, because the count rate falls further from 381 to 285 when you place a thin lead sheet. Which type of radiations are emitted by the radioactive sample? Alpha particles and beta particles only, alpha particles only, beta and gamma. So 36 ka, the correct answer is C. In a fission reactor, which particle causes a uranium-235 nucleus to split? So it's a neutron. So 37 का C है. तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता था? एक न्यूट्रॉन आता था और न्यूट्रॉन आके एक हैवी न्यूक्लियस को हिट करता था, and it used to split into two smaller nuclei and release two more neutrons with it. What is the purpose of moderators in a nuclear reactors? So moderators का purpose क्या होता था? To slow down the neutrons. So to absorb all the neutrons, so this is the purpose of a control rod, to produce more neutrons in order to create a chain reaction, no, to remove thermal energy in order to know to slow down the neutrons. So जब neutrons moderator को आके hit करते थे, so they used to lose its energy or their kinetic energy, and the neutrons used to get slowed down. Okay, in an electric field, a beta particle follows the path shown. Which path does an alpha particle traveling at the same speed follow? So this is the path of a beta particle, and he's asking you, okay, what is the path of an alpha particle? So alpha particle जो है आपके पास, अगर बीटा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो अल्फा पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ होगा. बाकी बीटा पार्टिकल जो है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है कंपेयर टू दी अल्फा पार्टिकल. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लेस कंपेयर टू beta particle. Okay, now next we will rho gives the sign of the charge on the nucleus of an atom and the sign of the charge of an electron. So हमारे पास न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? ठीक है, overall charge on a nucleus is positive because nucleus contain protons and neutrons carry no charge, but the have positive charge on, and the electrons carry a negative charge. Or an isotope has a half-life of positive rate of a sample of the isotope decreases to
1/16 of the initial value. So let's say initial count rate है n. n का हाफ करूं n/2. n/2 का हाफ मतलब n/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं n/4. फिर n/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं n/8. फिर अगेन n/8 को मल्टीप्लाई करूं with 1/2. So we have n/16. So how many half lives? 1, 2, 3, 4. So एक हाफ लाइफ उसने कहा है कि 6000 ईयर्स लगते हैं एक हाफ लाइफ में. सो 4 हाफ लाइफ में कितना टाइम लगेगा? 4 times 6000 and we get 24,000 years. Okay, so ये तो हमारे हो गए questions for the nuclear physics. Now for space physics, in which region of the electromagnetic spectrum does the sun radiate the most energy? Okay, so सबसे ज्यादा एनर्जी सन किस में रेडिएट करता है? So that is the infrared region. सन जो है it contains हमारे पास था GXUVIMR. अब इनमें से कौन से सोर्सेस हैं जो सन हमारे पास मतलब प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट एंड द इंफ्रारेड. और इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किस किस रीजन की है? इंफ्रारेड रीजन की. because infrared is the thermal or the heat energy. The stages सेंटर. तो ये हमारे पास मेन सीक्वेंस स्टार वाली स्टेज. तो मेन सीक्वेंस स्टार में क्या होता था कि इनवर्ट फोर्स एंड द आउटवर्ट फोर्स equal. The force of gravity becomes equal to the nuclear force. Internal gravitational collapse produce an increase in temperature. Expands, most of the hydrogen has been converted to helium. So in which order do these stages occur, starting with the earliest? So सबसे पहले हमारे पास कौन सी स्टेज आती है कि इंटरनल ग्रेविटी कोलैप्स प्रोड्यूसेस. So this is our first stage. फिर उसके बाद हमारे पास जी ओके यस. सो सब पहले हमारे पास नेबुला होता था. ठीक है. और नेबुला इज जस्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस पार्टिकल्स. उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज्ड टू ब्रिंग ऑल द पार्टिकल्स टुगेदर. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाती थी? फिर हमारे पास आ जाता था मेन स्टार. ठीक है. अच्छा. सो मेन सीक्वेंस स्टार में हमारे पास पहले उससे पहले हमारे पास द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती थी और पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा क्लोज कर देती थी. तो हाइड्रोजन के एटम्स जो है दे यूज्ड टू फ्यूज टुगेदर to form helium and they used to start releasing ample amount of energy. So the first stage is internal gravitational collapse produce an increase in temperature. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है force of gravity becomes equal to the outward force. Most of the hydrogen have converted into helium and then हमारे पास जो है star जो है it expands. So the correct sequence हमारे पास पहले X, फिर W, then C, and then we have Y. What is the approximate time taken by light from the sun to travel to the earth? So sun से earth तक light को आने में कितना time लगता है?
दैट इज ऑलमोस्ट 500 सेकेंड्स, या हम जैसे कहते हैं कि 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सो 8 मिनट्स भी यूज हो सकता है, 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स भी कह सकते हो। 8 minutes, 8 times 60 कर ले, so we get 480 seconds. Where in the solar system is the asteroid belt? So asteroid belt हमारे पास किसके दरमियान होती है? Between Mars and the Jupiter. So ये हमने सोलर सिस्टम पूरा पढ़ा था। सन, ठीक है, फिर उसके बाद मर्करी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, एंड नेपच्यून। सो दिस वाज योर सीक्वेंस, ठीक है। और हमारे पास सन और मर्करी के दरमियान तो एस्ट्रॉइड बेल्ट नहीं होती, बिटवीन वीनस एंड अर्थ भी नहीं होता, सो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो यहाँ पे होती थी हमारे पास एस्ट्रॉइड बेल्ट। Okay, so the correct answer for this is C. Okay, so now moving on to the next topic, magnetism. Screen नजर नहीं आ रही, let me check. अच्छा, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज और स्क्रीन वगैरह विजिबल है? My voice isn't clear and screen isn't visible clearly. Okay, just give me 1 sec. मैं इंटरनेट पे स्विच ही कर लेता हूँ अपने वाले पे। Okay, G. I hope it's clear and visible now. Okay, now let's just start with magnetism. A trolley carrying a strong magnetic rolls down a ramp at constant speed. It passes through a coil as shown. An EMF is induced in the coil. A graph. Okay, let me reshare the screen. कोई कह रहा है कि okay. G. So we have this trolley and it rolls down, and bottom may we have a magnet, or this magnet ke around we have a coil that has been wrapped around it. So an EMF is induced in the coil. A graph. So a graph of the EMF against time is plotted. The experiment is repeated with different coils and with steeper ramp. The trolley moves at a greater constant speed on the steeper ramp. So which graph is produced using the coil with the least number of turns and the steepest ramp? All graphs are drawn to the same scale. So इनमें से which one is going to be the correct graph for this? So हमारे पास this is going to be the graph. So उसने आपसे एक चीज कही है, an EMF is induced in the coil, a graph of EMF against the time is plotted, the experiment is repeated. So basically अगर आपको मतलब याद हो, ये ट्रॉली पे मैग्नेट है और ये मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है, ठीक है। अब जब when it rolls down, these magnetic field lines, they cut the coil, changing magnetic flux is produced, hence EMF and current is induced in the coil. So ये electromagnetic induction का phenomena यहाँ पे होता है। अब उसने आपसे कहा है which graph is produced using the coil with the least number of turns, with the least number of turns and the
steepest ramp, all graphs are drawn to the same scale. देखो, अगर तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है ईएमएफ का वो ज्यादा होना था। अब क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा। सो इट कैन नॉट बी बी और इट कैन नॉट बी डी। फिर दूसरा उसने आपसे कहा है स्टीपेस्ट रैंप की वजह से इट ट्रेवल्स एट अ ग्रेटर स्पीड। स्पीड ज्यादा होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एंड द टाइम पीरियड इज हाफ। सो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है और टाइम पीरियड हाफ हो रहा है तो लेट्स से पहले अगर इतना टाइम उसको लग रहा था तो अब इतने टाइम में हाफ टाइम में वो एक पूरा साइकिल प्रोड्यूस कर लेता है। सो दिस इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज सी। A student uses a transformer to light a filament lamp using a 230 volt AC supply. The lamp has a maximum voltage rating of 6 volt. What happens when the circuit is switched on? So the lamp does not light at all. The lamp lights at normal brightness. The lamp lights dimly. The lamp lights up brightly and then goes out. So the lamp lights up brightly and then goes out. Okay. So yes. Yeah. So basically अब ट्रांसफॉर्मर में अगर आपको याद हो so we have this primary side and we have this secondary side. ठीक है। अब प्राइमरी साइड पे व्हेन यू सप्लाई इट विद द एसी वोल्टेज तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मींस अगर पहले यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है तो नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पे साउथ और इधर नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाता है। सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस they travel from north to south or from south to north, and these magnetic field lines they cut the secondary coil. Again, changing magnetic flux is produced on the secondary side, hence EMF and current is induced in the secondary coil. अब बेटा अब अगर number of turns on the secondary coil is less than the number of turns on the primary coil, so this means that voltage in the secondary coil will be smaller than the voltage in the primary coil. Okay, so उसने आपसे ये पूछा कि what happens when the circuit is switched on? The lamp does not light at all. So this is not true. The lamp lights at normal brightness. So normal brightness पे नहीं वो यहाँ पे करेगा। अच्छा उसकी the lamp has a maximum voltage rating of 6 volt. अब लैम्प की उसने वोल्टेज रेटिंग आपको एक रीजन की वजह से दी हुई है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वीपी। सो एन एस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द secondary coil and NP is the number of turns in the primary coil. Vs is the voltage in the secondary coil and Vp is the voltage in the primary coil. So हम पहले voltage निकालते हैं Ns over Np times Vp. Number of turns in the secondary is 20 and in the primary side is 300 and voltage in the primary coil is 230. तो अगर आप इसको सॉल्व कर लो सो 20 over 300 times 230 that gives us 15.3 volt। देखो सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज मिल रही है दैट इज 15.3 वोल्ट जबकि लैम्प को ऑपरेट करने के लिए 6 वोल्ट रिक्वायर्ड है और ये इससे बहुत ज्यादा वोल्टेज है। तो शुरू में लैम्प एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा एंड सडनली इट विल जस्ट
it just goes out. It will stop working because आपने उसकी rating से ज़्यादा voltage दे दी है and that will damage the lamp. Okay? So सबसे पहले you were supposed to use the formula NS over NP is equals to BS over BP. यहाँ से आपने निकाल लेना था कि लैंप को कितने वोल्टेज मिलेंगे and that voltage is the voltage in the secondary coil. Once you get the voltage, फिर उसके बाद आपने चेक करना था कि लैंप की नॉर्मल रेटिंग क्या है 6 वोल्ट उससे बहुत ज्यादा है तो लैंप एकदम से बहुत ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा but then the lamp will be damaged and it will stop working. Okay, a left hand can be used to determine the direction of the force when a current carrying conductor is perpendicular to a magnetic field. So हमारे पास F M C father mother child force magnetic field and current. So अब आपसे ये पूछ रहा है कि which quantities are represented by the direction of figures P, Q, and R. So P stands for the force, Q stands for field, and R stands for the current. So 38th ka D hai. As a magnet is moved into the coil of wire as shown, there is a small positive reading on the sensitive ammeter, which change must increase the size of the reading. Again, electromagnetic induction. Moving the opposite pole into the coil will only reverse the direction of the current induced in the coil. Pulling the magnet out of the coil with the same speed will not make any difference. Pushing the magnet in faster. So the correct option is C. Electrical power is transmitted by cables over long distances at very high voltages. What are the effects of using a high voltage transmission system? So power loss in the cables reduce हो जाता है and current in the cables is also very low. So the correct answer is D. So जब भी हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो हम करंट जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल रखते हैं क्योंकि जो पावर लॉस है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला आई स्क्वायर आर तो अगर आई जो है वो कम होगा तो पावर लॉस जो है वो कम होगा और बाकी आप वोल्टेज जब हाई रखोगे सो यू हैव टू कीप द करंट वेरी स्मॉल. What proves that a metal bar is a permanent magnet? So it attracts both ends of a compass needle. So no, it attracts one end of the other of another magnet. It conducts electricity. It repels one end of another magnet. So this is the uh, so what proves that a metal bar is a permanent magnet? तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसका एक एंड जो है वो रिपेल करता है दूसरे एंड के मैग्नेट को. So the diagram shows a bar magnet and four labeled arrows. Which arrow shows the direction of the magnetic field at the point where the arrow is shown? So magnetic field lines they always travel from north towards the साउथ से नॉर्थ से बाहर निकल रही होती है और साउथ में एंटर कर रही होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Okay, now next up we have the diagram shows a wire carrying current in a magnetic field. What is the direction of the force on the wire? So we have a wire carrying a current in the magnetic field. So एक current carrying wire को आपने magnetic field में रखा है तो automatically force produce होगी. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule को अगर आप यूज करते हो तो magnetic field is from left to right, current is in the upward direction, so the force is going to be
into the page. ठीक है? So उसके लिए you will have to use your, so if you place your hand like this, so you will see कि this is how, मतलब you have just placed your finger. So ये thumb है, ये आपके पास जो सेकंड फिंगर है ये वो है, ये इंडेक्स फिंगर है जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, ये करंट है, तो ये यू विल सी के फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है. The diagram shows a simple DC motor. What is the part labeled Q? So that is split ring commutator. और ये साथ वाला क्या था? These are your carbon brushes. Next में the diagram shows a transformer. A student writes 4 statements about how the transformer works. So we have primary coil, secondary coil, and alternating voltage across. An alternating voltage across the primary coil induces an unchanging voltage across the secondary coil. An alternating voltage. Okay, student writes 4 statements about how the transformer works. Which statement explain how the transformer works? So we have to see which statement explains how the transformer works. Okay, first statement है, an alternating voltage across primary coil induces an unchanging voltage across the secondary coil. An alternating voltage across the primary coil produces a changing magnetic field. ये जो unchanging का word है, this is wrong. So this is not the correct statement. Produces a changing magnetic field in the iron core. A changing magnetic field in the iron core induces an alternating voltage across the secondary coil. An unchanging voltage. So ये जहाँ पे unchanging का word है, that is not correct. So the correct option is 2 and 3. Okay. Now next, the diagram shows a relay used to switch an electric motor. A student makes 5 statements to explain how the relay switches on the electric motor. The statements are not in the correct order. So what is the correct order of the statement? Okay. So सबसे पहले हमारे पास the current in the coil magnetizes the electromagnet. The armature closes the contacts. The current in the secondary circuit makes the motor turn. So ये primary circuit है. The electromagnet attracts the iron armature. The switch S in the primary circuit is closed. So सबसे पहले हम क्या करते हैं? We close the switch. Once you close the switch, so the current starts flowing into the electromagnet. और जैसे ही current electromagnet से flow करता है, तो उससे ये होता है कि this electromagnet is strongly magnetized. So the second stage is the current in the coil magnetizes the electromagnet. फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स प्रोड्यूस हो गए. लेट्स से द नॉर्थ है, द साउथ है, और इस आर्मेचर पे भी मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस हो गए, जिसकी वजह से ये वाला एंड जो है इट विल मूव डाउनवर्ड्स, and this the other end of the armature will move to the right, and it's going to close the contacts. The electromagnet attracts the iron armature, ये third है. फिर armature closes the contacts, ये fourth. और fifth में जब ये contacts आपस में join कर जाएंगे, so the current in the secondary circuit makes the motor turn. So the circuit is complete for the secondary circuit. So this is your sequence. तो पहले 5, फिर 1, फिर 4, then 2, and then 3. So the correct answer is D.
Okay. Now, next section where we have current, electricity, and DC circuits. A metal conductor is connected between the positive and negative terminals of a battery. Which row gives the direction of movement of particles that flow in the conductor and their name? Okay. So name actually मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन करते हो तो कन्वेंशनल करंट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं. So the correct answer, name of the particle is electron and it travels from negative terminal to the positive terminal. So the answer is D. Three identical cells are connected in parallel to a resistor. What is the advantage of using three cells in parallel rather than using a single cell? So each cell produces more energy? No. So जब आप parallel में connect करते हो तीन cells को तो उनका क्या advantage होता है? Each cell supplies more charge. Each cell takes longer to discharge. So वो ज्यादा देर के लिए चलते हैं. EMF is greater than that. No. तीन अगर 1.5 के है तो ओवरऑल जो ये वोल्टेज देंगे that is going to be 1.5 volt. So this is not true either. A student has 315 ohm resistors. She connects the resistors together in a different arrangements. What is the minimum resistance and what is the maximum resistance of the arrangements that the student can produce? Okay, so what is the तीन है तो सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस तो तब होगी अगर आप तीनों को पैरेलल में लगा दो. So ये भी 15 ohm, 15 ohms and another 15 ohms. So if you have to calculate their combined resistance, 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So 1 over RT equals to 1 over 15 plus 1 over 15 plus 1 over 15. Yeah, I got 3 by 15. And at the end, please don't forget to take the reciprocal. So that gives us 5 ohms. So minimum resistance is 5 ohm. Maximum है कि तीनों को सीरीज में इकट्ठा कनेक्ट कर दो. 15, 15 और 15 ऐड हो जाएंगी. And add okay, it is 45 ohm. So the correct answer is B. Next में the circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to the lower section of a potential divider. The resistance of R increases. What happens to the two voltmeter readings V1 and V2? Okay, so अब आपसे कह रहे हैं कि circuit diagram shows a variable resistor R connected in parallel to a potential divider. Resistance of R increases. So इसकी resistance increase हुई है. What happens to the voltmeter readings V1 and V2? So अगर R increase होता है तो इन दोनों की जो combined resistance है वो increase होगी और series के अंदर that resistor gets more voltage जिसकी resistance ज्यादा हो. तो V2 will increase or V1 will decrease. So V2 will increase and V1 will decrease. So the correct answer is B. Okay? ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि in series high resistance gets more voltage. Gets more voltage. Next में the power consumption of a microwave oven is 1500 watt
the cost of 1 kilowatt hour of electrical energy is 24 cents. What is the cost of using the microwave oven for 10 minutes? तो total cost निकालने का formula क्या होता था? Power in kilowatt times time in hour times cost of single unit. ये फॉर्मूला तो पावर किलोवाट 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इन किलोवाट टाइम मिनट्स में डिवाइडेड बाय 60 टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स और कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट है 24 सेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 4 24 5 2 5 3 और 2 2 2 3 6 तो करेक्ट आंसर इज ए बाकी और हाउ टू यूज द कैलकुलेटर आप डायरेक्टली जो भी वैल्यूज है just put them in the calculator and you'll get the answer for that. Okay, the diagram shows a simple electric motor which row describes the charge on an electron and the direction of electron flow. So electron with charge negative or it flows from y to x. So ये आ गया B. 33 charge of 0.4 coulomb pass through a resistor in 1 second. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है I is equals to Q over T 0.4 divided by 1 0.4 amperes. In 2 seconds 20 joule of thermal energy is produced in the resistor. So energy दी हुई है what is the potential difference across the resistor? एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला IV ओके सो एनर्जी है 20 करंट है 0.4 वोल्टेज है V टाइम है 2 तो 0.4 इंटू 2 0.8 V तो 20 डिवाइडेड बाय 0.8 किया सो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा सो 20 डिवाइडेड बाय 0.8 gives us just a sec so that is 25 volt so the correct answer is C. Okay, now next में the diagram shows a simple electric circuit which meter measures the current in resistor R2. So R2 में ये R2 है so जो एमीटर R2 के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा वो R2 के में जितना करंट है वो बताएगा so D is the correct answer for this. The diagram shows 5 electrical circuits. All of the resistors shown are identical. Which circuits have equal resistance? So अगर हम देखें बेटा तो ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में है और उसने कहा है रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है ये भी पैरेलल में है तो ये तो सेम है ये दोनों भी रेजिस्टर आपस में पैरेलल है ठीक है और ये आपस में सीरीज है और ये देखो यहां से करंट आएगा इधर दो पार्ट में डिवाइड होगा तो ये भी पैरेलल है और ये तीनों भी पैरेलल है तो उसने आपसे पूछा विच सर्किट्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस 1 2 3 एंड okay just 1 2 3 and 5 so the correct option is A. Which electrical appliances uses the heating effect of electricity? So cell phone में हम भी चाहते हैं हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बट आइडियली वी डोंट वांट दैट तो फैन भी मतलब हीटिंग इफेक्ट वगैरह के लिए नहीं पर्पस हेयर ड्रायर so it uses the heating effect of electricity. How many kilowatt hours of energy are used by a 1000-watt heater connected to a 230 volt supply for 30 minutes? तो उसने आपसे पूछा kilowatt hour. How many kilowatt hours of energy are used? So
हमारे पास पावर दी हुई है वॉट में, 1000 से डिवाइड किया, ये आ गई किलो वॉट में, और टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, डिवाइड किया 60 से तो वो आवर्स में आ गया, ये 1 बन गया, और ये 1/2, तो ये 0.5 किलो वॉट आवर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज बी। There, with safety precautions must be taken when wiring an electrical kettle that has a stainless steel outer casing. It must be earthed and have a fuse in the live wire. So this is correct. So आप metal casing को हमेशा earth करते हो, and fuse is always connected into the live wire. Fuse क्या करता है? This is the symbol of the fuse. ठीक है? So जहाँ पे हाई वोल्टेज आता है, ठीक है, फ्यूज रेटिंग से, फ्यूज मेल्ट होके डिस्कनेक्ट कर देता है मेन सप्लाई को अप्लायंस के साथ। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। सो व्हेन द फ्लैश on a camera is used, a charge of 1.5 coulomb flows for 0.003 seconds. So again, आप करंट निकाल सकते हो Q over T 1.5 डिवाइडेड बाय 0.003, और ये करेंगे तो यहाँ से करंट आ जाएगा 0.5 over 0.003, ये आ गया 500 ampere. The average voltage across the lamp is this. What is the electrical energy supplied to the flash lamp, and what is the average power supplied? Power का formula P is equals to IV 500 times 3600. So 500 times 3600 किया तो ये आता है 18, 1 2 3 4 5, सो ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 वॉट है। सो दिस इज द पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम, और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से 0.003 से, सो वी गेट 5400। सो 35 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? डी है। ओके, सो बाकी नेक्स्ट पे, द डायग्राम शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट which lamp lights when S1 is closed and S2 is open. तो अगर आप इसको क्लोज करोगे और इसको ओपन रखोगे तो ये करंट इधर से जाएगा और L1 और L2 में से करंट फ्लो करेगा, तो L1 और L2 will light up, no current will flow through L3. So L1 and L2 only. The diagram shows a hair dryer which statement explain why the hair dryer does not need an earth wire. It has a live wire, it has a neutral wire, it has double insulation. The cable is insulated. So it has double insulation. तो इसकी जो ये मतलब बॉडी वगैरह होती है वो डबल इंसुलेटेड होती है, तो अगर आप उसको हाथ में भी पकड़ लेते हो तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू static electricity. Positively charged rod is held near an uncharged metal sphere on an insulating stand. What is the distribution of charge on this sphere? तो इस स्फेयर के जितने नेगेटिव चार्जेस है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक तरफ आ जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Two metal spheres are mounted on insulating stands. Sphere X is initially uncharged and sphere Y is initially positively charged. Metal rod held by an insulating handle is placed in contact with X and Y as shown. What are the charges on X and on Y after the rod is placed in contact with them? ठीक है, so X uncharged है, Y जो था वो initially he is saying कि Y was initially positively charged. So अब हमारे पास X और Y दोनों पे क्या चार्जेस आ जाएंगे?
पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों? रीजन ये है कि इसके जो पॉजिटिव चार्जेस, अगर लेट्स से इसके पास 10 पॉजिटिव चार्जेस थे तो वो बाकी के 5 उधर आ गए। ठीक है, सो दे बोथ आर गोइंग टू बी they both become positively charged. Now we have light and lenses. Which characteristics describe the image formed by a vertical plane mirror? So एक plane mirror में जो हमारे पास image form होती है, real and upside down, no. Virtual and upright, so yes. मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होती है, इट इज अ वर्चुअल इमेज और एंड इट इज ऑलवेज अपराइट। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होता है। A ray of light passes into a block of charging by induction. अच्छा, चार्जिंग थ्रू इंडक्शन है बट चार्जिंग बाय अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। ठीक है, a ray of light passes into a block of transparent material as shown. अब बेटा सबसे पहले आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मल लाइन क्या होती थी? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका इंसिडेंट एंगल ये है और इसका रिफ्रैक्टेड एंगल ये है। ठीक है, इंसिडेंट एंगल होगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 30, 60 माइनस 5, 55 और रिफ्रैक्टेड एंगल होगा 90 माइनस 60, दैट इज 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला साइन आई ओवर साइन आर। तो साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 30, तो इससे हम अगर डिवाइड करें, सो व्हाट डू वी गेट? We get 1.64. So the correct answer is C. Okay, so I hope it's clear. तो बेटा प्लीज बी वेरी केयरफुल। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है, प्लीज ड्रॉ द नॉर्मल लाइन फर्स्ट और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल between the incident ray and the normal line. ठीक है, so this is your angle of incidence and angle of refraction is the angle between the normal line and the refracted ray. So ये निकाल के refractive index का formula n is equal to sin I over sin R. Now for 21st, the diagram shows light incident on the straight edge of a semi-circular glass block after passing through it. Which diagram shows refraction and an angle I equal to the critical angle of the glass block? So ये critical angle की बात हो रही है अभी यहाँ पे। Critical angle क्या होता था? When a ray of light travels from denser ray travels from denser to less dense and angle of refraction is 90 degrees. So आपका जो angle of incidence होता है, that is called as the critical angle. So ये वाली जो है, this refracted ray makes an angle of 90 degree, तो ये critical angle को ये represent कर रहा है। So 21 का C है। The diagram shows a ray PQ reflected by mirror X to a parallel mirror Y. Reflected ray along RS is parallel to PQ. Which statement is correct? The angle between PQ and QR is 45. So PQ और QR के दरमियान तो angle 90 है. Angle between QR and RS is also 90 degrees. Angle of incidence of PQ on mirror X is 60. No. अगर मैं इधर नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 45 डिग्रीज है। Angle of incidence of QR on Y is 45. So QR on Y is
45. So this is true. So the answer is D. An object is viewed through a thin convergence. The diagram shows the paths of two rays from the top of the object to an eye. How does the image compare with the object? So ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक तो ये रे है जो आपके पास क्या कहते हैं लेंस के बिल्कुल सेंटर से पास करी है, ठीक है, और एक ये रे है जो ये ऊपर से ऐसे मतलब जा रही है and it becomes parallel later on और इनको हमने backwards converge की है, ठीक है. So how does the image compare with the object? It is larger and inverted. देखो इमेज फॉर्म तो इधर ही हो रही है कहीं पे, ये इमेज है, इमेज लार्जर तो है बट इट्स नॉट इन्वर्टेड, इट इज लार्जर एंड इट इज अपराइट. सो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही सीधे हैं, सेम मतलब अपवर्ड्स है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर. Violet and indigo. Okay, so violet and indigo have the shortest wavelengths in the spectrum of visible light. ठीक है, so Vibgyor. So आपसे कह रहे हैं कि violet and indigo have the shortest wavelength. So shortest wavelength violet की है और largest wavelength red की है, ठीक है. Which three colors in order of increasing wavelength immediately follow indigo? In order of increasing wavelength. So indigo के बाद हमारे पास आता है ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद हमारे पास वी हैव ऑरेंज. सो ब्लू, green or yellow. Which three colors in order of increasing wavelength immediately follow indigo? So blue, green और फिर yellow. So 26th का correct answer is B. Okay? So ये sequence आपने देख लेना है. Okay. Next में ये आपको याद होना चाहिए. Your array of red light and air enters a semicircular block. Which diagram shows the partial reflection and refraction of the ray? So अब यहां से अगर ये रे आती है और बेटा ये यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूं तो रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी सेम. सो ए और बी तो नहीं हो सकते, ठीक है. सो अगर मैं ये वाली डायग्राम को देखूं, ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमारे पास सेम है. बाकी ग्लास से एयर में जा रहा है तो इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ना के बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस इज नॉट करेक्ट ईदर, ये करेक्ट है, ठीक है. एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is greater than the angle of incidence. Now, 25th में an object of height 1.5 centimeter is placed in front of a converging lens of focal length 2 centimeter. The arrangement is shown on the full scale ray diagram. What is the linear magnification of the produced by the lens? So magnification क्या होती है? Image height divided by object height. So image height over object height. अब उसने आपको ये बता दिया है कि ये मतलब 1 सेंटीमीटर का है. सो अब हम काउंट कर लेते हैं. 2 4 5 2 4 5. सो ये 3 सेंटीमीटर है इमेज की हाइट, ठीक है. और ऑब्जेक्ट की हाइट 2 4 5 1
1.2, 1.4, 1.5। So ये यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बी 2। तो ये 25th का करेक्ट आंसर इज ए। Now 26th, in which optical instrument is the distance between the object and the lens less than the focal length of the lens? So इसका हमारे पास आ जाता है, in which optical instrument is the distance between the object and the lens is less than the focal length of the lens. So ये focal length है, focal point है, तो ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट से पहले हम कब रखते हैं? ठीक है, सो दो रेज ये लेंस के सेंटर से मैंने गुजारनी थी, रे मेरी थोड़ी सी गलत मतलब बनी है, ये बैकवर्ड एक्सटेंड हो गया, तो ये मैग्नीफाइड इमेज बनती थी, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है बेसिकली। ठीक है, नाउ a boy stands beside a girl in front of a large vertical plane mirror। ठीक है, they are equal distances from the mirror. As shown, the boy sees an image of the girl. Where is the girl's image? So boy sees the image of the girl, तो गर्ल की इमेज तो एग्जैक्टली ए पे ही बनेगी ना, क्योंकि इमेज हमेशा बिल्कुल आपके सामने, बॉय की इमेज डी पे बनेगी, गर्ल की इमेज ए पे। Now light traveling in air is incident on a water surface. A refractive index is given and the angle of refraction is given in the water. What is the angle of incidence in the air? N is equal to sin I over sin R. N is 1.3 sin I over sin 40। अब ये sin 40 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, so 1.3 into sin 40 is equal to, let me put this on calculator, sin 40 that gives us 0.836। ठीक है, 0.836 equals to sin I, ये sin इधर ला के inverse, so I will be shift sin inverse 0.836, we get 56.7 degrees, which is almost 57 degrees. So the correct answer is D for this. Now, for question number 28, the diagram shows a ray of light passing through a triangular glass block. Which angle is the critical angle of the light in the glass block? So again, critical angle pe ray of light is refracted at an angle of 90 degrees along the surface. So 28 ka D hai. Now next में a lens is used to produce a magnified image as shown in the scale diagram. What is the magnification produced? ठीक है, so what is the linear magnification in this? Again, you will have to calculate the image height। ठीक है, so 2, 4, 5, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 4. So 1, 2, 3, 4, 4.5 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट है 4.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट है 2, 4, 5 और वही मतलब 1, 1.2, 1.5। सो इसकी है 1.5, तो 4.5 over 1.5 and that is 3. So magnification factor is 3 for this. Ultraviolet radiation is a component of the electromagnetic spectrum. Which application uses ultraviolet radiation? So Bluetooth technology, prenatal scanning तो ultrasound यूज होता है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में यूवी रेडिएशंस नहीं आती। ठीक है, स्टेरिलाइजिंग वाटर
और थर्मल इमेजिंग, तो स्टेरिलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। नेक्स्ट सेक्शन में भी आप साउंड, a sound wave passes through a substance. The diagram shows the position of molecules of the substance at one point in time. Which type of wave is a sound wave and what is at x? At x we have compression because the particles are denser, they are closely packed together. So x पे we have compression. ठीक है, और टाइप ऑफ वेव, साउंड वेव इज ऑलवेज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, सो 27th का आंसर है ए। A man stands between two tall buildings P and Q. He is 50 meter from P and 200 meter from Q. He sounds a horn. He hears the first echo from building P, and 1 second later he hears the first echo from building Q. So what is the speed of sound calculated using this information? Okay. So let's say यहाँ से जब वो हॉर्न करेगा बजाएगा तो ये साउंड राइट जाएगा फिर वापस आएगा। तो हम पहले राइट साइड के लिए सॉल्व करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, अज्यूम स्पीड ऑफ साउंड इज v। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम का क्या होता है? डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो अगर मैं राइट साइड के लिए लेट्स से मुझे जो टाइम, उसको जो टाइम लगे वो टी है, ठीक है, और टी फॉर द टी राइट कह देता हूँ। तो स्पीड v है और टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो 400 है। अब लेफ्ट साइड के लिए जो टाइम लगा है उसके लिए स्पीड v है और टोटल डिस्टेंस 50 जाने का और 50 वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस इज 100। अब उसने आपको कहा है कि he hears the first echo from P. So from P, ये P के लिए और ये Q के लिए, मतलब P पे उसे कम टाइम लगा और Q पे ज्यादा टाइम लगा एंड 1 सेकेंड लेटर। तो जो Q पे उसको, मतलब जो राइट वाला जो टाइम है, अगर मैं लेफ्ट वाले टाइम में 1 सेकेंड और ऐड कर दूं तो v ओवर 400 इक्वल्स टू v ओवर 100 प्लस 1। ये इधर ले आता हूँ, v ओवर 400 माइनस v ओवर 100 इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर सेम करो, सो v माइनस 4v ओवर 400 इक्वल्स टू 1। ये आ गया माइनस 3v इक्वल्स टू 400, और 400 डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये आता है 1। तो मुझे लग रहा है मैंने कोई, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेटेड, मुझे लग रहा है 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स जस्ट चेक अगेन, ठीक है। सो ये वाली भी मैं, ओके जी। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है, दोनों सिनेरियोज के अंदर हमारे पास स्पीड जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। और बल्कि राइट साइड वाला जो है वो उसने कहा है कि he hears the first echo from P, ठीक है। तो और at 1 second later he hears the first echo from Q. So it was supposed to be V over 100 equals to V over 400 plus 1. So V over 100 minus V over 400 equals to 1. ये 4V minus V आ जाएगा 3V over 1, और ये आ रहा है 400 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं, जस्ट गिव मी 1 सेक। ओके, हम 400 डिवाइडेड बाय 3 करें तो दैट गिव्स अस
ठीक है, 100/v और 400/v। ओके, अच्छा, ठीक है, माय बैड। ठीक है, सॉरी जी। ओके, सो अच्छा, मैंने गलती, ओ सॉरी। ओके, सो बेसिकली जो मिस्टेक मतलब अभी हमने की है, वो मिस्टेक ये हुई है हमसे। लेट मी, मैंने स्पीड और डिस्टेंस उल्टा लिख दिया था। ओके, सो टाइम फॉर द राइट साइड। देखो, अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से साउंड निकलेगा, साउंड विल गो टू द राइट एंड इट ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो ऊपर डिस्टेंस आना था, मैंने ऊपर स्पीड लिख दी थी, तो 400/v। और लेफ्ट के लिए 100/v। ठीक है, अब बाकी जैसे हम पहले लिखा था, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट कि राइट साइड पे उसने हमें ये कहा था कि 1 सेकंड बाद आया, तो मतलब ये टाइम ज्यादा है। तो लेफ्ट साइड में 1 सेकेंड ऐड कर दूं तो वो टाइम राइट वाले टाइम के इक्वल होगा। तो राइट साइड पे टाइम लगे 400/v और लेफ्ट पे इट टुक 100/v प्लस 1। सो नाउ इट्स गोइंग टू बी 400/v माइनस 100/v इक्वल्स टू 1। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 400 - 100, ये आ जाएगा 300, और ये v उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई, तो स्पीड हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड। सो द ओनली मिस्टेक दैट वी, मतलब जो हमने मिस्टेक की थी, वो थी डिस्टेंस की जगह स्पीड कर दिया था और स्पीड की जगह डिस्टेंस। तो लेट्स जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 27th. Which two waves are components of the electromagnetic spectrum? G, X, U, V, I, M, R. ठीक है, light and sound is not a part of it. Light है, sound नहीं है. Water wave is not a part of that. Ultrasound and the ultraviolet, no. X-rays and the microwaves. Now for 28th, the sound from a ship is reflected by a cliff. An echo is heard by a sailor on the ship 4 seconds after the sound is made. The speed of sound is this. How far from the cliff is the ship? So, अब basically ये ship है. Sound from a ship is reflected by a cliff. ठीक है, ये cliff है, ये ship है। साउंड यहाँ से ट्रैवल करता है, यहाँ से जाता है आगे, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। तो टोटल टाइम उसे लगे 4 सेकेंड। सो सिर्फ एक साइड का जाने आने में 2 सेकेंड्स लगेंगे। स्पीड दी हुई है 320 मीटर पर सेकेंड। उसने अब हमें कहा डिस्टेंस निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू speed into time. So 320 into 2, so that is 640 meter. So 28 का आंसर है B. Now next में the students are asked for the uses of ultrasound. Three suggested uses for ultrasound are cleaning jewelry. This is correct. Tanning on a sunbed, obtaining an image of an unborn baby. Which suggestions are correct? So P and R only. So ultrasound is used for these two purposes only. Now next section may we have thermal physics. The diagram shows examples of thermal expansion, expansion of liquid in a thermometer, expansion of tight lid on a glass container, expansion of the long metal beam supporting a roof. In which diagram is the thermal expansion useful? So expansion of liquid in a thermometer में it is useful, और अगर लेड समटाइम्स बहुत टाइट हो जाता है और अगर आप ब्लो ड्राई करते हो, हीट करते हो, तो लेड एक्सपैंड हो जाता है।
तो इट्स यूजफुल इन दिस केस एज वेल। और थर्ड केस में यूजफुल नहीं है, अगर बीम्स एक्सपैंड कर जाएंगी तो उसके ब्रेक करने के चांसेस हैं, तो पी एंड क्यू ओनली। One statement about copper explains why it is better thermal conductor than glass. Atomic vibration is passed on to neighboring copper atoms slowly. Slowly, no. Atoms move through the copper and pass on the kinetic energy. So they are not moving; they only vibrate above the mean position. There are density changes within the copper. There are free electrons in the copper. Which statement which statement describes the transfer of thermal energy in a liquid by convection, a decrease in its density. So जब आप एक liquid है, liquid को heat करते हो, so hot liquid becomes less dense and they rise upwards. और जो colder molecules हैं, they are denser, so they sink bottom. A decrease in its density causes the liquid to rise. So 18th का A है. Now next में pot X and pot Y are both in a cool room. Pot X contains hot water below its boiling point. Pot Y is identical to X. Okay, so pot X जो है दोनों को हमने cool room में रखे. X जो है it contains hot water below its boiling point. Y is identical to X and contains water that is kept boiling by a hot plate underneath it. What happens to the average kinetic energy of the particles in the liquid water in pot X and to the average kinetic energy of the particles in the liquid water in pot Y? Okay, so in pot Y. So kinetic energy of liquid particle in X will decrease. ठीक है? So a kinetic energy of liquid particles in Y will not change. रीजन इज आप इसको बॉयल कर रहे हो ना, ठीक है? तो अगर आप बॉयल कर ही जा रहे हो, सो यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग इट विद द थर्मल एनर्जी, सो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना लिक्विड पार्टिकल्स की, इट विल नॉट चेंज। और एक्स की काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इसलिए होगी क्योंकि हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल will escape the surface or they will carry a lot of heat energy with them, leaving behind less energetic molecules जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो 20th का बी है। Now for 21st we have solid metals are good thermal conductors. How closely packed are their particles and do the metals contain free electrons? Packing of particles, they are very close together, they contain free electrons, yes. So 21st का answer है B. Now for 22nd, cotton wool is a good thermal insulator. It consists of many threads of cotton which are tangled together to make a material which can easily be pulled apart or compressed. The diagram shows the structure of cotton wool. Why is cotton wool a good thermal insulator? Each thread is very thin. No, it has a large surface area because it is made of many threads. No, it has a low density because of the trapped air. It traps air and prevents convection. So ये मेन रीजन होता है फॉर द थर्मल इंसुलेशन कि एयर जब ट्रैप होती है तो कन्वेक्शन के थ्रू हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। A metal kettle is heated on a grid above red hot glowing coal. What are the main thermal energy transfers through the bottom of the kettle and within the water? So through kettle हमारे पास kettle metal की है तो कंडक्शन होती है मेटल में और विद इन वाटर तो कन्वेक्शन है। तो 23rd का करेक्ट आंसर इज सी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव वेव्स। द डायग्राम shows two waveforms. Which arrow shows the wavelength of a longitudinal wave? So wavelength होती है between two
compressions between two consecutive crust or troughs. So 24th का A है क्योंकि ये भी compression है और ये भी compression है. So दो compressions के दरमियान या दो crust के दरमियान का distance भी wavelength के equal होता है. 25th में a bell on a wall outside a classroom rings. A student is standing at X shown on the view from above. Zeros. 1:30 probably. वैसे 1 का टाइम दिया होगा बट हाफ एन आवर मे बी इंटरप्रेट हो जाए. ना मीटिंग करनी कितने दिन मतलब आप इस ग्रुप में बैठे हैं अच्छा तो 1:15 तक हो जाएगी होगा. hopefully I'll try my best. Thank you. Okay, so a bell on a wall outside a classroom rings. A student is standing at X, shown on the view from above. The door of the classroom is closed, and the student in the room at X hears the bell ring. The door is opened, and the sound heard by the student from the bell is louder. What causes the sound reaching the student to be louder? सो ये कौन सा फिनोमेना होता है. यहाँ से साउंड वेव्स आती है और ये जैसे डोर ओपन होगा सो साउंड जो है वो डायफ्रैक्शन होती है. डायफ्रैक्शन होती थी बेंडिंग ऑफ वेव्स आफ्टर पासिंग थ्रू अ गैप. तो डायफ्रैक्शन के थ्रू ही इज एबल टू हेयर द साउंड. Now, the diagram shows one wavefront of a wave as it travels from deep water to shallow water in a ripple time. What happens as the wavefront moves into the shallow water? The speed of the wavefront decreases. So the correct answer is B. So deep water में wavelength and speed is greater. और shallow water में wavelength and speed is smaller. So ये please remember this. Deep water में wavelength और speed ज्यादा होती है, shallow water में wavelength और speed कम होती है. Which example describes a transverse wave being refracted? Infrared waves traveling in an optical फाइबर उसमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ना, तो वो ये रिफ्रैक्शन नहीं है. लाइट वेव्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटरिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. सो बी. सो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपके पास वेव ट्रैवल करती है सो रिफ्रैक्शन ऑलवेज अकर. नाउ नेक्स्ट सेक्शन में वी हैव प्रेशर. Pressure, piston X is pushed into a hydraulic cylinder. Piston X produces a pressure Px in the liquid in the cylinder. The diagram shows the cylinder viewed from above. There are two other pistons Y and Z in the cylinder. The pressure on Y and Z are Py and Pz. What is the relationship between Px, Py and Pz? अच्छा, अब उसने आपसे कहा X is pushed into a hydraulics. X produces a pressure Px in liquid in the cylinder. So inside हमारे पास liquid है और ये liquid जो है हर piston पे equal pressure exert करेगा. So correct answer is D. So Px, Py and Pz will be equal. Okay. Next में air is trapped in a cylinder by a piston. The pressure of the air is P and the length of the air column is 20 centimeter. The piston is moved outwards. The length of the air column increases by 40. The temperature of air remains constant. What is the new air pressure? So new air pressure हमारे पास क्या होगा? So देखो, pressure is inversely proportional to volume. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? ये पिस्टन का एरिया into its length. So pressure is inversely proportional to area times length.
अब क्योंकि एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम। तो अब आपसे उसने ये कहा है कि प्रेशर इज पी व्हेन द लेंथ इज 20। सो व्हेन द लेंथ इज 20, प्रेशर इज पी। अब न्यू लेंथ हमारे पास है 60 सेंटीमीटर। तो जब लेंथ हमारे पास 60 सेंटीमीटर मतलब लेंथ 3 टाइम्स बढ़ेगी, तो प्रेशर 3 टाइम्स कम होगा, तो P/3। सो 11th का करेक्ट आंसर इज बी। सो प्लीज बेटा, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू द लेंथ। So area is constant, pressure is inversely proportional to the length. So जैसे लेंथ बढ़ेगी तो प्रेशर उतने टाइम्स कम होता है। So when the length is 20, pressure is P। अब जब ये पिस्टन इधर से इधर चला गया तो टोटल लेंथ हो गई 60। तो लेंथ 3 टाइम्स बढ़ने का मतलब है प्रेशर 3 टाइम्स रिड्यूस करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, question number 40. What is the property of both liquids and gases? They always fill their containers. They are incompressible. They can flow. So the correct answer is C. So gases are compressible. Liquids, they fill their containers. Or next way, question number 15. In an experiment, the volume of a gas in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased. The values obtained are shown. What is a possible explanation for these results? So, pressure जब double हो रहा है, तो pressure volume half हुआ है। फिर जैसे ही pressure 3 टाइम्स हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हुआ है? 3 टाइम्स कम होना चाहिए था, बट और अगर लेट्स से 3 टाइम्स रिड्यूस करूं तो 20/3, ये मेरे पास आता है 6/18, 6.66 आना चाहिए था, पर उससे कम है। सो आफ्टर प्रेशर गैस स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द सिलेंडर। आफ्टर प्रेशर इज डबल्ड, gas starts leaking out of the cylinder into the cylinder। अगर होता तो वॉल्यूम बढ़ता, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, ज्यादा मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे ज्यादा कम हुआ है, तो गैस लीक आउट हो रही है, इसका मतलब है। सो 15 का बी है। A barometer is an instrument used to measure atmospheric pressure. In one type of barometer, height of liquid in a tube is measured. In which diagram does the height h represent atmospheric pressure? So yeah, this is the correct diagram for the barometer, जिसमें यहाँ पे वैक्यूम आ जाता है, और ये जो इस लिक्विड प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure, और लिक्विड प्रेशर में जो रो जी एच में हाइट है वो होती है इस कॉलम की। Okay, now moving on to work power energy. A worker pulls a rope with a force P through a distance D in the direction of the force as shown. The causes of a block of weight W to move vertically upwards through a height H. How much work is done by the worker? Work done क्या होता था? Product of force into distance in direction of force. So work done होता है product of force into distance covered in the direction of the force. So उसने कहा है worker pulls a rope with a force P. ये force P है through a distance D in the direction of the force as shown. तो ये force है और इसी direction में distance है, तो work done will be P into D. तो PD.
सो 12th का B है. P into H no. W into H हो सकता था, but we don't have that option. ठीक है. So question number 13, a battery is connected in a circuit to light a lamp. What is the energy stored in the battery? And that is your chemical energy. So batteries में human body के अंदर chemical energy is stored. A box with a mass of 4 kg is pulled from rest along a horizontal flow by a constant force F. A constant frictional force of 1 Newton acts on the box. एक box है, इसका mass है 4 kg and it is pulled from rest along a horizontal force by a constant force F. Frictional force है 1 Newton. When the box traveled 1 meter, its velocity is 1.5 1.5 meter per second. The kinetic energy of the box is equal to the work done on the box. What is the force F? So kinetic energy का formula 1 over 2 mv square, 1 over 2 mass is 4, velocity is 1.5 ka square. So just put the values on the calculator. So that is 0.5 into 4 into 1.5 ka square. That gives us 4.5 joule. Now he's asking us to calculate the magnitude of force F. So work done का formula force into distance. अब net force कितनी है? F minus 1 and the distance is 1. So work done is F minus 1. So आपके पास work done और kinetic energy equal है. So F minus 1 is equal to 4.5. So F is equal to 4.5 plus 1. That is 5.5 Newton. So the correct answer for question number 11 is D. Okay. Now the diagram shows a curved track. A ball is released from the position shown at which point is the gravitational potential energy stored in the ball maximum. So gravitational potential energy when the ball is at its maximum height, तो maximum height में तो ball आपके पास A पे है, ठीक है. So सबसे ज्यादा kinetic energy, maximum kinetic energy at C, maximum gravitational potential energy at A. How does an oil fire power station differ from a nuclear power station? Gases emitted by hot fuel are emitted into the atmosphere. Steam is produced in a boiler using hot fuel. The hot steam is used to turn a turbine. ठीक है. अच्छा, steam is used in a boiler. सो स्टीम दोनों केसेस में यूज हो सकती है. तो उसने आपसे पूछा है कि ऑयल फायर्ड पावर स्टेशन और न्यूक्लियर स्टेशन में क्या फर्क है. हॉट स्टीम इज यूज्ड टू टर्न अ टर्बाइन. टर्बाइन दोनों के अंदर हम लोग रोटेट करवाते हैं. टर्बाइन्स आर यूज्ड टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. सो गैसेस emitted by hot fuel are emitted into the atmosphere. So जब आप फ्यूल बर्न करते हो तो उससे जो गैसेस emit होती हैं, they are released into the atmosphere. Now for question number 14. An electric motor is used to lift a load at a constant speed. Gp is stored and the load increases. The moving load also has stored kinetic energy. Which expression is used to calculate the efficiency of the motor when the load is being lifted at a constant rate? Okay. So efficiency का formula हमारे पास यूजफुल एनर्जी आउटपुट होगा यूजफुल एनर्जी इनपुट. सो देखो बेटा, यूजफुल एनर्जी आउटपुट तो ये है, जब वो हाइट गेन करेगा तो इट विल गेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. एंड यूजफुल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड का मतलब है
This is useful power output or power supplied is your power input. So the correct answer is B. So जब भी आप लोड को लिफ्ट करते हो तो जो वो हाइट गेन करता है तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है that is your power that is your energy output, and if you divide it by time so you get the power output. A battery delivers 3000 joule of energy to a small 2-watt electric motor before the battery stops working. For how long? Power is work done over time or energy over time. ठीक है, सो हमने निकालना टाइम है. So power is equals to energy over t. T is equals to energy over power. Energy की जगह आ जाएगा 3000 और पावर की जगह आ जाएगा 2. So that is 1500. क्या कहते हैं 1500 hour. A battery delivers 3000 joule of energy to a small 2-watt electric motor before the battery stops working. For how long is the to a small battery delivers 3000. ओके, ये जो हमारे पास टाइम है सेकंड्स में है, तो इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना. सो वी हैव टू डिवाइड 1500 by 60. So 6 2s are 12, 6 5s are, so 25 minutes will be the answer. ठीक है, ये सेकंड्स में आया था, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स वो as well. So next में a constant force F pulls a block of weight W up the slope shown. How much work is done by F in pulling the block up the slope? ठीक है, so how much work is done? So अब ये जो force F है इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो L है. So F into L. The input power to a motor is 12-watt motor waste 590 joule of energy in 1 minute. What is the motor waste 590 joule of energy in 1 minute? Okay, so जो power waste हुई होगी, power is energy over time is 60. 590 over 60 is 9.83. 9.83 watt. Efficiency का formula useful power output over total power input times 100. So power output ये तो waste वाली power है, तो 12 minus 9.83 divided by 12 into 100. So 12 minus 9.83 12 minus 9.83 divided by 12 into 100. So ये आती है 18% efficiency. So yeah, as it is, you can put the expression on calculator. Electric motors have efficiency of about 90% when used in an electric train, which forms of wasted energy are produced. Sound only, thermal and chemical. Thermal और sound दोनों की फॉर्म में. केमिकल की फॉर्म में तो नहीं मतलब होता, तो thermal और sound. What is the unit of power? Power is energy over time. Energy is joule, time is in second, तो joule per second. So 19th का B है. Now next may we have forces, density at forces and density. Okay, just a second.
Okay, so now starting with forces and density, the graph shows how the extension of a spring changes with the mass suspended from it when the spring is on planet X and when the spring is on planet Y. ठीक है? So we have a mass or mass against extension. Which conclusion can be drawn from these graphs? It is not possible to compare the gravitational field strengths on planet X and Y. So, so this is नॉट मतलब करेक्ट क्योंकि हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है ठीक है सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन और फोर्स इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द वेट ठीक है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन F is equals to kx F is mg is equals to kx तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि G is equal to, okay, uh, M is equal to K over M into X. So yes, you can मतलब compare with the help of this K क्या relation मतलब हुआ है. The gravitational field strength on X is equal to the gravitational field strength on Y. Gravitational field strength on X is 1/3 of gravitational field strength on Y. Gravitational field strength on X is 3 times the gravitational field strength on Y. So basically, when you have to do the comparison of two things, so for the same mass, extension produced in Y is less compared to the extension produced in uh, ये वाले से भी देख सकते हैं ना सो अब हम देखते हैं कि y और x जब हमारे पास मास 2 kg है दोनों केसेस में तो 2 kg से कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है y में हुई है 10 सेंटीमीटर और x में एक्सटेंशन कितनी हुई है x में एक्सटेंशन हुई है 30 ठीक है सो बेसिकली अब x में ज्यादा एक्सटेंशन होने का मतलब है कि द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एक्स इज मोर ठीक है क्योंकि अगर ये चीज ज्यादा है तो इसका मतलब है जी भी ज्यादा होना चाहिए तो इसमें कितना ज्यादा है 3 times ग्रेटर है देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन वाई ठीक है Now, question number 11, a student finds the density of an irregularly shaped object. He chooses his equipment from the list, stopwatch, measuring cylinder, and a balance. Which equipment does the student need to use? ठीक है? So, student finds the density. Density के लिए हमें टाइम तो चाहिए नहीं तो stopwatch required नहीं measuring cylinder और balance चाहिए balance से mass measure होगा measuring cylinder से volume तो 11th का D now question number 12 a uniform beam is pivoted at its center two weights are placed on the beam in the positions shown and the beam is balanced by an upward force F what is the size of the force F so sum of clockwise movement is equal to the sum of anti-clockwise movement. So ये anti-clockwise है, ये clockwise है और ये anti-clockwise है. तो moment होता था product of force and perpendicular distance between the force and the pivot. So ये फोर्स जो 30 न्यूटन सबसे पहले ए की क्लॉकवाइज है 60 और इसका डिस्टेंस कितना है 30 और एंटी में एक 30 है और इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से 40 प्लस ये जो फोर्स एफ है इसका पिवट से टोटल डिस्टेंस है 50 सो 6 3 1800
3 fours are 1200 plus 50F, 1800 minus 1200 equals to 50F. ये आ गया 600 is equals to this, और 600 divided by 50, 12 Newton. So 12th का B है. Four objects of equal mass rest on a table. The center of mass of each object is labeled G. Which object is the least stable? So, which object is the least stable? So, जिसका center of mass बहुत high है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा center of mass high किसका? इसका, तो B आंसर है. Each tire of a car has an area of 100 in contact with the ground. The car has a mass of 1600 kg. The weight of the car is equally distributed among the four tires. ठीक है, सबसे पहले weight निकाल लूँ. W is equals to mg, 1600 into 9.8. So 1600 into 9.8 is 15,680. सो ये जो फोर्स है ये चारों टायरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है. तो एक सिंगल टायर पे कितनी फोर्स लग रही होगी, डिवाइडेड बाय 4, एंड वी गेट 3920 न्यूटन. आगे वो कहते हैं, अच्छा जी की वैल्यू उसने वैसे 10 यहाँ पे दे दी हुई है, पर एग्जाम में अब हमने अब आपने सिर्फ 9.8 ही इस्तेमाल करनी है. ठीक है, तो मैं कैलकुलेशंस के लिए अभी 10 ले लेता हूँ. और वैसे मतलब ये पुराना क्वेश्चन है ना, तो इस वजह से, अदरवाइज अब आपने सिर्फ 9.8 से ही सॉल्व करना है. तो 16,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई 4,000 न्यूटन. व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड? प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. सो फोर्स की जगह 4,000, एरिया इज 100, ये आ जाएगा 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. So the correct answer is C for this. Okay, a gas syringe contains a volume V1 of gas at pressure P1. Volume is reduced to V2 without any change of temperature. What is the expression for the change in pressure? So शुरू में वो कह रहे प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1. So P1 is equals to K over, अच्छा K over V1, तो P1 V1 is equals to K. अब जब प्रेशर उसने हमें नहीं पता, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन प्रेशर? न्यू प्रेशर होगा P2. P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय द न्यू वॉल्यूम V2, और K की जगह आ जाएगा P1 V1 ओवर V2, और चेंज इन प्रेशर is P2 minus P1. P2 है P1 V1 over V2 minus P1. P1 V1 over V2 minus P1. So the correct answer is C for this. Okay. Now next हमारे पास, let's just quickly, a student finds that, okay, so a student finds that the mass of a rock is 65 grams. She pours 30 centimeter cube of water into a cylinder. She places the rock in the water so that the water covers the rock completely. Water level rises to 55. ठीक है, so volume of rock कितना होगा? 55 minus 30. 50 minus 30 is ये आ जाएगा 25 cm cube. So this is volume of rock. Mass of the rock is given and he is asking you to find out the density. Density होती है mass over volume. So this is your density denoted with rho. Mass is 65 divided by 25. So 65 divided by 25, we get 2.6. So 2.6 ग्राम पर cm क्यूब आ गया. अब क्योंकि उसने ग्राम और cm क्यूब में रखा हुआ था, इसलिए मैंने यूनिट्स
कन्वर्ट नहीं की है। A small submarine of mass 1000 kg sinks in water with a constant speed of 2. What is the resultant? Constant speed है, the resultant force will always be 0. So fifth का A. A student drops from rest a light ball in air. The ball experiences some air resistance as it falls. What happens to velocity and to the acceleration of the ball during the first few seconds after the release? So velocity increase होती है और acceleration decrease होती है क्योंकि air resistance जो है वो act कर रही होती है. So the correct answer is C. So बेटा जब भी कोई बॉल आप थ्रो करते हो ना और वो नीचे आता है तो वेलोसिटी जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है और जैसे ही उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है क्योंकि उसकी रिजल्टेंट फोर्स कम हो रही होती है ना. Question number 7, where the stopping distance of a car traveling at a certain speed is measured in 4 different situations. On a dry road, tires on a dry road with old worn tires, on a wet road with new tires, on a wet road with old worn tires. The results are shown. Which two results are possible measurements on the dry road with old worn tires? ठीक है. So okay, so ये stopping distance है of a car traveling at a certain speed is measured for 4 different situations on a dry road with new tires, on a dry road with old worn tires, on a wet road with new tires, on a wet road with old worn tires. So अगर तो wet road होता और ओल्ड worn tires होता तो फिर तो 40 होता. ठीक है. और अगर wet road होता स्टिल तब भी वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा होती. ठीक है. तो उसने कहा है which two results are possible measurements on dry road है with old worn टायर्स. तो ओल्ड टायर्स का मतलब है कि उसकी इतनी बहुत अच्छी नहीं है वो. तो दरमियान में कोई वैल्यू होनी चाहिए एक्स एंड वाई. सो बी इज द आंसर फॉर दिस. वो कह रहा है spring has a length of 9 centimeter when loaded with a 200-gram mass egg. The extension mass graph for the spring is shown. The 200-gram mass is replaced with a 100-gram mass. What is the new? वो कह रहा है कि 200-gram mass is replaced with a 100-gram mass. What is the new length of the spring? So 100 grams में कितनी extension है? 1 centimeter. Original length है 9. तो 9 plus 1, it's going to be 10 centimeter. So question number 8 का, sorry. So basically जब 200 grams है तो टोटल लेंथ हमारे पास थी 9 सेंटीमीटर. 200 ग्राम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन थी 2. तो ओरिजिनल लेंथ, पहले हमने ओरिजिनल लेंथ निकालनी है. ओरिजिनल लेंथ होगी 9 माइनस 2, 7 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल है. ठीक है. क्योंकि ये जो 9 सेंटीमीटर है दिस लेंथ इज विद एक्सटेंशन. तो विदाउट एक्सटेंशन मैंने निकाल लिया. और 100 ग्राम्स के लिए एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर है, ओरिजिनल लेंथ 7 है. तो ड्यू लेंथ होगी, इन दोनों को प्लस कर दोगे. सो दैट इज 8 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Now, for question number 9, the internal space station orbits the Earth. Which arrow shows the direction of the force on the internal space station when it is at point X? ठीक है. So, it shows the direction of the force. So, force, gravitational force है, which is acting towards the center, or the centripetal force which is acting towards the center. Which expression is equal to the impulse? ठीक है. इम्पल्स इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम. फोर्स क्या होती थी? इम्पल्स ओवर टाइम. और इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. और मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो वी यूज टू डिनोट मोमेंटम विद पी. और
फोर्स का फॉर्मूला mv minus mu over t. A box with mass 4 kg is pulled from rest along a horizontal floor by a constant force F. Constant frictional force of 1 Newton acts on the box. ठीक है? When the box has traveled 1 meter, we already did this question. ठीक है? So we have done this question number 11 and 12th already. Okay, now last section है kinematics and physical quantities का. So it's going to take us just 5 to 10 more minutes और फिर हमारी ये complete हो जाएगा इंशाल्लाह. Okay, the diagram shows the level of liquid in a measuring cylinder. The scale is marked in cm cube. What is the volume of the liquid? So 21, 22, 23, 24 cm cube. So question number 1 ka B. The diagram shows distance time graph of a car. Car is traveling along a straight up road up a hill. Which quantity for the car is constant? Distance time graph का जो gradient है, that gives us the speed. So straight line passing through the region means कि उसकी जो speed है वो constant है. ठीक है? और उसने कहा कार इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड अप अ हिल. ठीक है? तो एक्सेलरेशन तो उसकी इज कांस्टेंट एंड ग्रेटर देन जीरो. एक्सेलरेशन तो है ही जीरो. और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्योंकि वर्टिकली मतलब ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी उसकी चेंज हो रही है. ठीक है? ग्रेविटेशनल हाइट इंक्रीज हो रही है तो वो भी नहीं. और उसने कहा है कि कांस्टेंट स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट होगी. तो क्वेश्चन 2 का डी है. A distance time graph and speed time graph show the motion of an object. How speed and acceleration of the object determined from these graphs. ठीक है? So speed, how are the speed and acceleration? Speed जो है gradient of a distance time graph gives us the speed, और gradient of speed time graph gives us the acceleration. So question number 3 का D है. The diagram shows three forces acting on a block. Resultant force is 6 Newton to the right. Which additional force produces a resultant force of 3 Newton? The guy resultant force is 6 Newton to the right. 11 minus 5 is 6 Newton to the right. Which additional force produces a resultant force of 3 Newton to the left? तो 9 न्यूटन अगर आप लेफ्ट पे उसको करोगे तो 9 minus 6 3 न्यूटन टू द लेफ्ट प्रोड्यूस होगी. तो 1 का बी. A teacher measures the length of a classroom. What is the most appropriate instrument to use? So a measuring tape is the most suitable one for this. ठीक है? So question number 230. Which value is 1,000 of a meter? 1,000 of a meter is 0.001 मीटर. और अगर मैं इसको एक मीटर में 100 होते हैं तो 0.001 into 100 एक दो 0.1 सेंटीमीटर. सो क्वेश्चन नंबर 3 का डी है. A car of mass 1000 kg is traveling down a steep hill. Brakes fail and the driver uses a horizontal sand-filled safety road to stop the car. Okay. The car enters the sand at a speed of 10 and expresses a constant stopping force of 2500 Newton. How far does the car travel? ठीक है? In the sand before coming to the rest. ठीक है? So उसने कहा है कि how far? So basically we have to find out the distance. So we have a car. We have this car और इसका mass है 1000 kg. उसने कहा है कि it starts traveling at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे आके ये गाड़ी स्टॉप हो गई, रेस्ट पे आ गया. ठीक है? इट कम्स टू रेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2500 न्यूटन. ठीक है? ओके. सो हाउ फार डज द कार ट्रैवल
in the sand before coming to rest. अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ से इसकी एक्सेलरेशन निकालूं, F is equals to M में, A is equals to F over M, फोर्स है 2500, मास है 1000, ये आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और वैसे क्योंकि उसने कहा है ये फोर्स नेगेटिव लेंगे ना, तो ये डिसेलरेशन आ गई -2.5। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, -2.5, 0 -10 ओवर टी, ये टी उधर जाके मल्टीप्लाई, टी इज -10 ओवर -2.5, दैट इज 4 सेकेंड्स। ठीक है, सो उसको कितना टाइम लगे, उसको टाइम लगे क्या कहते हैं, इट टुक 4 seconds। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड होगी इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनिशियल है 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड है 5 और टोटल टाइम है 4, तो 5 × 4 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा, एंड दैट इज 20 मीटर। सो दिस इज हाउ वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट इट। ठीक है, उसने फोर्स दी हुई थी, मास दिया हुआ था, और आपने उसकी डिसेलरेशन निकाली, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है, स्टॉपिंग फोर्स है, तभी मैंने माइनस का साइन लगा दिया था। वहां से एक्सेलरेशन आई, फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके टाइम निकाल लिया, ए इज इक्वल टू बी माइनस यू ओवर टी, और फिर एवरेज स्पीड निकाली, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड ओवर टाइम, और फिर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम के इक्वल रख के तो सॉल्व कर लिया। A ball starts from rest and rolls down a steep slope. The ball then rolls along rough horizontal ground. ठीक है, starts from rest and rolls down a steep slope. Ball then rolls along rough horizontal ground. Which graph shows the speed of the ball at different times? ठीक है, तो शुरू में जब रोल करेगा उसकी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए, तो इसमें तो स्पीड ही उसने कांस्टेंट कर दी है, ऐसा नहीं हो सकता, बी नहीं है। ठीक है, फिर उसने कहा बॉल देन रोल्स अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, व्हिच ग्राफ शोज, तो इसका मतलब बाद में उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो ए भी नहीं है। और उसने ये नहीं कहा है कि रेस्ट पे आ गई तो सी भी नहीं है, स्पीड से स्लो डाउन होना शुरू हुई है, शुरू में स्पीड बढ़ी फिर स्लो डाउन हो गई, तो इसका क्वेश्चन 5 का डी है। Now for question number 6, a block of wood is placed on a table. External forces act on the block, but the block remains stationary. A student suggests 3 conditions for the block to remain stationary. Which conditions are necessary for the block to remain? The resultant force on the block must be equal to 0. तो ये तो true है. The resultant moment on the block must equal to 0. ठीक है, this is also true. The external force must act through the center of the mass of the block. So this is not necessary. So sixth ka A. Okay, so last question that we have is a car travels at 60 kilometer per hour on a straight road. The road is dry, the driver applies the brakes. Suddenly the table shows thinking distance, braking distance, and stopping distance. Same car is driven by same driver at 60 on same road when it is wet. तो जब वेट है तो थिंकिंग डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और ब्रेकिंग और जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेट रोड ऑन ऑल थ्री ऑफ, सो नो चेंज ऑन थिंकिंग डिस्टेंस बट द ब्रेकिंग डिस्टेंस द
stopping distance will both increase. And then we have this last few more questions are left. A boy starts at P and walks 3 meter due north from P to Q, and then 4 meter due east from Q to R. What is the shortest distance that he must now walk to have an overall displacement of 0? So he is asking you कि overall displacement जो है वो उसकी and overall displacement of 0. So question number 1 का the correct answer is 5 meter. ठीक है. So P to Q फिर Q से R पे गया. The shortest displacement is the shortest distance between 2 points. So P to R is 5 meter. A student investigates the motion of a ball falling through the air. Which quantity is a vector? The diameter of the ball? No. The gravitational force on the ball is a vector quantity? Yes. Distance from which the ball is dropped? No. The speed at which the ball hits the ground? So they both are scalar quantities. A skier slides down a slope. The diagram shows how speed varies with time. What is average acceleration during 6 seconds? ठीक है. So average acceleration during the 6 seconds, final minus initial over time, final speed at 26 minus 0 in a time of 6. So 26 over 6, we get 4.3 meter per second square. So 4.3 meter per second square. Average इसने कहा है ना. A solid object immersed in water hangs from an elastic thread. Three force act on object, its weight W, tension in the thread T, tension in, okay, weight is acting vertically downwards, ठीक है, and a force F, which is the upthrust force upwards, or tension T. Which equation is correct when the object is stationary? F plus T is equal to W, or F plus T minus W is equal to 0. So question number 4 का correct answer is D. क्योंकि stationary होने का मतलब है sum of upward forces is equal to the downward forces. So these are the last two questions. The diagram shows a car going around a circular track at constant speed, which are resultant force is always acting towards the center. An object in a lab is used to determine gravitational strength, which quantity is equal to the value of G. So weight का formula होता था mg, तो W over m is equal to G, तो weight over mass. So question number 6 का correct answer is C. Okay, so that's it बेटा. ठीक है.